स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की बेसिक थ्योरी के बारे में। देखिए, इसमें हमने बात की है उसकी हर कमांड की थ्योरी के बारे में कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड आखिरकार होता क्या है। चलिए देखते हैं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड कॉमनली नोन एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर application developed by Microsoft. It is part of the Microsoft Office suite of productivity software, which is also include application like Excel, PowerPoint, and Outlook. Microsoft Word is widely used for creating, editing, and formatting document, ranging from simple letters and reports to more complex documents like research papers and business proposals. The Home tab is Microsoft is one of the primary tabs in the Ribbons interface, and it contains a variety of the commands related to text formatting and editing. Here is a list of some common command found in the Home tab. जैसे इसमें होता है हमारा क्लिपबोर्ड ग्रुप, इसमें होता है कट। कट क्या होता है? कट द सिलेक्टेड टेक्स्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। कॉपी क्या होता है? कॉपी द सिलेक्टेड टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट। पेस्ट क्या होता है? पेस्ट द कंटेंट ऑफ द क्लिपबोर्ड। फॉर्मेट पेंटर कॉपीज द फॉर्मेटिंग ऑफ अ सिलेक्टेड टेक्स्ट एंड अप्लाई इट लेसवेयर। फॉन्ट ग्रुप में क्या होता है? फॉन्ट फैमिली होता है इसमें। जैसे हमारा इसमें होता है अलाउ यू टू चेंज द फॉन्ट ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट। फॉन्ट साइज चेंज द साइज ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट। Grow font, make your text a bigger. Shrink font, make your text a bit smaller. Clear formatting क्या होता है? Remove all formatting from the selections, leaving only the normal unformatted text. Bold makes the selected text bold. Italic क्या होता है? Italize the selected text. Underline क्या होता है? Underline the selected text. Strike through क्या होता है? Strikes through the selected text. सबस्क्रिप्ट मेक द सिलेक्टेड टेक्स्ट सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है? मेक द सिलेक्टेड टेक्स्ट सुपरस्क्रिप्ट। टेक्स्ट हाईलाइट कलर हाईलाइट द सिलेक्टेड टेक्स्ट विद द कलर। फॉन्ट कलर क्या होता है? चेंज द कलर ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट। चेंज केस चेंज द सिलेक्ट टेक्स्ट टू अपर केस, लोअर केस एंड कॉमन कैपिटलाइज ईच वर्ड। फिर इसमें होता है आपका पैराग्राफ ग्रुप होता है। पैराग्राफ ग्रुप क्या होता है? अलाइन टेक्स्ट अलाइन द सिलेक्ट टेक्स्ट ऑफ द लेफ्ट। सेंटर क्या होता है? सेंटर द सिलेक्ट टेक्स्ट। अलाइन राइट अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द राइट। जस्टिफाइज द सिलेक्टेड टेक्स्ट। नंबरिंग क्या होता है? एड्स नंबरिंग टू द सिलेक्टेड पैराग्राफ। बुलेट्स क्या होता है? एड बुलेट टू द सिलेक्टेड पैराग्राफ्स। डिक्रीज इंडेंट डिक्रीज द इंडेंट ऑफ द सिलेक्टेड पैराग्राफ। फिर होता है इंक्रीज इंक्रीज द इंडेंट ऑफ द सिलेक्टेड पैराग्राफ। लाइन स्पेसिंग एडजस्ट द स्पेसिंग बिटवीन लाइन। स्टाइल ग्रुप क्या होता है? चेंज स्टाइल अलाउ यू टू अप्लाई टू प्रीडिफाइन स्टाइल टू द सिलेक्टेड टेक्स्ट। क्लियर फॉर्मेटिंग क्या होता है? रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सिलेक्टेड टेक्स्ट। एडिटिंग क्या होता है? फाइंड ओपन द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग। फिर इसमें होता है आपका रिप्लेस ओपन द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग विद द रिप्लेस टैब एक्टिविटी। सिलेक्ट में क्या होता है? प्रोवाइड ऑप्शन टू द for selecting text, select all, select object, select text with the similar formatting etc. थैंक यू डियर स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और जो लोग मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।